शांति। बच्चों ने सुना और बच्चे समझते हैं कि हमारे सामने बाबा, जिसको पतित पावन कहा जाते हैं, जो बाबा ही कहेंगे, परम पिता परमात्मा भाई पतित पावन। Om Shanti. Murli extract from 16th January 1965. Children heard and understood that Baba is in front of us. He is called the Purifier. He would be called Baba, wouldn't he? The Supreme Father, the Supreme Soul, the Purifier. Only he would be called the Purifier. Brahma, Vishnu and Shankar would not be called the Purifier. No. Why? Because he alone is the ocean of बच्चों ने सुना और बच्चे समझते हैं कि हमारे सामने बाबा, जिसको पतित पावन कहा जाते हैं, जो बाबा ही कहेंगे, परम पिता परमात्मा भाई पतित पावन। Om Shanti. Murli extract from 16th January 1965. Children heard and understood that Baba is in front of us. He is called the Purifier. He would be called Baba, wouldn't he? The Supreme Father, the Supreme Soul, the Purifier. Only he would be called the Purifier. Brahma, Vishnu and Shankar would not be called the Purifier. No. Why? Because he alone is the ocean of knowledge. ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माएं पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है, क्योंकि अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, समझा नहीं? You children know that you listen to the knowledge from the Supreme Father, the Supreme Soul, because you have now become soul conscious. You understood? तो जो आत्म अभिमानी होते हैं वो शिष्टाचारी बनते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा ही बैठ करके के देही अभिमानी या आत्म अभिमानी और उनको समझाते हैं। Those who are soul conscious become elevated because it is the Supreme Father who sits and makes you soul conscious. Dehi Abhimani, Atam Abhimani. He explains to your children. देखो बच्चे, पाप आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है। Look, children, the soul becomes a sinful soul and the soul becomes a charitable soul. तो मैं इसलिए कहेंगे पाप जीव बनते हैं या पुण्य जीव बनते हैं, नहीं तो कहते पाप आत्मा बनती है, सही नहीं क्यों? You wouldn't say that it's the body that has become sinful, the pap jeev, or the body that has become charitable, punya jeev. It is the soul that becomes sinful, not the body. क्यों? संस्कार आत्मा में रहते हैं, शरीर तो कभी-कभी विनाश हो जाते हैं। तो गोया तुम जानते हो बच्चे कि बाप को, शिव बाबा को, परम पिता परमात्मा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। The sanskars are in the soul, but the body is destroyed. This means you know that this Father, Shiv Baba, the Supreme Father, the Supreme Soul, is also called the imperishable surgeon. अविनाशी सर्जन का अर्थ क्या है? आत्मा भी अविनाशी, तो आत्मा का पाप भी अविनाशी है। What does the imperishable surgeon mean? The soul is imperishable and the Father of all souls is imperishable. क्योंकि मरता है, विनाश होते हैं शरीर, आत्मा तो विनाश नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि आत्मा के ऊपर शैतानी की
when a person dies, the body is destroyed, but the soul is not destroyed. Yes, it's definite that the soul is covered with the rust of the devil. समझे नहीं? कौन सी कट जाती है? ये नंबर 1 कट चलती है, बिल्कुल गंदे से गंदी विकार। पीछे सेकंड नंबर में क्रोध की कट, ये कट है, जंग के जिसको कहा जाते हैं। So what rust is it covered with? It is the number 1 rust, the completely dirtiest of all of the vices. And then the second number is the rust of anger. This is all the rust. बैठ करके आत्मा को समझाते हैं कौन? परमपिता परमात्मा। तो ये निश्चय होना चाहिए नहीं कि अभी परमपिता परमात्मा इससे साधारण ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करे, ये हुआ रथी। So this one sits and explains to the souls. Who is explaining? The Supreme Father, the Supreme Soul. So you need to have this faith, do you not? The Supreme Father, Supreme Soul, Shiva, enters the ordinary chariot of Brahma. So he is the charioteer. ये रक्षाकार समझे नहीं? 5 विकार को रावण कहा जाते नहीं, तो उसको रावण की कट चल गई है। So he is the charioteer of this chariot. The 5 vices are called Ravan. The soul is covered with the rust of Ravan. तुम दुखी हो पड़े हो, बहुत दुखी हो पड़े हो सब। तो बाप कहते देखो मैं कैसे तुम्हारी कट उतारता हूँ, देखो सीधा सीधा बताते हैं नहीं। So this is why you have all become unhappy, because you're covered with this rust. So the Father says, look at how I remove all your rust. He tells us in a very straightforward manner. He tells us in a very straightforward manner, I did this in the previous kalpa. I remove your rust every kalpa. How? I alone am the surgeon. No one else can be the surgeon.